हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एजेट 800 जो विंडोज सर्वर 2022 है उसका पार्ट नंबर 2, और इसमें हम लोग जानेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2022। सो आई हैव इमेज, आई हैव डाउनलोडेड इमेज and I'm going to install 2022 in my VMware workstation. So already you can see one machine I have installed earlier, but now I'm going to configure new machine, and then I will show you how to create machine and install 2022 step by step here. So before installation this 2022, you should have image of Windows Server 2022 that can be easily downloaded. Okay, you can download trial version, okay, and you can install in VMware Workstation and practice easily. Okay, so here VMware Workstation 16 Pro, just I will open and just click create new virtual machine. यहाँ पे हमेशा आपको I will install operating system later, the same option you have to click and then next, and Windows Server 2019 आपको यहाँ 2022 शायद नहीं दिखेगा, नो यू कैन नॉट सी 2022, बट नो प्रॉब्लम। इमेज हमारे पास 2022 का है, तो आप सेलेक्ट कोई भी कर लो इसमें से 2012 या 16, वो ऑटोमेटिक 2022 ले लेगा। ठीक है, तो जस्ट आई विल सेलेक्ट हियर 2019 and click next, and here whatever name you want you can give. So just I would give here Win Server 2022 because one I have created. Okay, so and by default the location is going to store here C drive and program and document in that virtual machine. Okay, so if you want to change the location you can change. If you have any doubt related VMware Workstation, so I have uploaded a video VMware Workstation full training where I have explained how to create virtual machine, how to take snapshot each and everything, so you can see that. Okay, if you are beginner VMware Workstation you can see that is important. So I'll click here next, and here just click custom hardware. Customize hardware means you can select the image. So I will select the ISO image and just browse, and wherever you store the image just pick that. So I think this one 2019 and this is the 2022 I have downloaded. Image size you can see it's around 4 GB only, and if you compare 2019 it's 600, more than 6 GB. Okay, so just I will click open. So I have created virtual machine for Windows Server 2022. Okay, and this is PC2. Just I will open this and just switch on virtual machine and it is going to install now, and here just press enter. अब इसके बाद की कहानी, अगर आपने विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर रखा है तो एज इट इज यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी चेंजेस इन दैट, आपको एज इट इज मिलेगा। अगर आपने विंडोज 10 इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज ये देखिए इट्स लुक लाइक ओल्ड वर्जन ऑफ विंडो। ओके, विंडोज सर्वर 2012, और यहाँ से स्टेट अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, तो आई विल सिलेक्ट इंडिया, इंग्लिश इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं होगा इंडिया, yeah it is here. If you don't select this, what happen, time zone will disturb. Okay, so later you can disturb in network, so always you should select your correct time zone. Okay, just click next and install now. So it takes some time and it won't take much more time because I'm using SSD hard disk, so which will work very fast. Okay, so here I don't have key, it is trial version, so I have to click I don't have key. ईमानदार रहना है, ऑनेस्टली हमें बता देना कि हमारे पास कोई की यू नहीं है। यहाँ पे देखिए there are different editions, like 2 editions we have, especially standard and data center, और ये same 2022, 2019, 16 and 2012 also you can see the same. और ये जो दिख रहा है आपको ना डेस्कटॉप एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये जो दिख रहा है एक इवोल्यूशन दिख रहा है, एक स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये जो दिख रहा है डेटा सेंटर, और ये जो दिख रहा है डेटा सेंटर डेस्कटॉप, मतलब ये क्या है, डेस्कटॉप फुल इंस्टॉलेशन है। अगर इसको करेंगे तो ये कोर है, केवल कमांड लाइन काम करेगा। वैसे सेम यहाँ स्टैंडर्ड और ये फुल है। डेस्कटॉप मतलब ये ग्राफिकल भी रहेगा। ठीक है,
तो आपको हमेशा डेस्कटॉप, तो इस अगर डेटा सेंटर हम करेंगे, डेटा सेंटर में हमेशा ज्यादा फीचर्स होता है कंपैरिजन स्टैंडर्ड। ओके, सो आई सेलेक्ट डाटा सेंटर एंड नेक्स्ट, और ये लाइसेंस एग्रीमेंट मैं सिंपली कहूँगा यस एग्री नेक्स्ट, और बस बाकी का कहानी सेम है यहाँ पर, और ये सब क्रिएट हो जाएगा जो भी सिस्टम, और ये यहाँ से हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट, इतना मालूम होगा। इट टेक सम टाइम, तब तक हम क्या करेंगे, वीडियो को रिकॉर्डिंग पॉज कर देंगे, और जब एक बार हो जाता है फिर हम बैक आएंगे, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। सो यहाँ देखिए हो गया ये पूरा 100% हो चुका है। देन अब ये मशीन रीस्टार्ट होगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट विल टेक एडमिनिस्ट्रेटर, और password you have to give complexity password, so just I'm giving common password that I cannot share you, and I'll click finish. That's all, installation done. You can see the first screen of your Windows Server 2022. I'll log in this, and now first job what you need to do, just like Windows 7 earlier, we after installing Windows 7 or Windows XP, we used to install the driver, right? So same here for Windows Server 2022, because it's a graphic based server. Okay, इसमें ज़्यादा ग्राफिक ऐड किया है, इसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि ये ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी ग्राफिक वाली चीज़ें होती हैं उसमें हमें ड्राइवर की आवश्यकता होती है, तो यू हैव टू इंस्टॉल द ड्राइवर। सो कुछ ड्राइवर विल टेक ऑटोमेटिकली, लाइक यू कैन सी नेटवर्क ड्राइवर हैज टेकन ऑलरेडी, but graphic driver is still not there, so you have to install. How to install driver? I have VMware Workstation machine, so direct VMware Workstation machine has privilege to install the driver by using VMware tool. तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल, ये टूल इंस्टॉल करने से इसका ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट, और माई कंप्यूटर पे जाकर इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये आ जाएगा VMware टूल का, और जैसे ही ये इंस्टॉल होगा ये देखना पूरा ये स्मूथली काम करने लगेगा, पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा। जस्ट आई विल क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सो इंस्टॉल होने के बाद भी ये एक बार मशीन रीस्टार्ट होगा। यस इट इज डन, and what I can do, the same time I can change the computer name, because after changing the computer name also system reboot. Okay, so you can change the computer name here. I'll change the computer name, just I'll give 2022 server 2, so it will reboot and now it is done. Okay, तो इस तरह से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। कोई भी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट सेम है सर्वर का, चाहे 2012, 16, 19 या 22। मैं बार बार कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर कंपनी में आपको 2022 पे नहीं 2016 या 19 पे काम मिलेगा, ठीक है। 2016 या 19 को बोलना नहीं, उसी पे काम ज़्यादा करना है, उसी पे प्रैक्टिस आप बेटर है तो उसी पे करिए। सो नाउ इज डन, इंस्टॉलेशन डन। और इस वीडियो मैंने यही बताया था कि इंस्टॉलेशन करना। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कुछ और किसी और टॉपिक पे। तो थैंक यू सो मच।